Some tablet coating part and its defects are remaining. So we'll see tablet coating. Okay, we have already seen few important points from this, but few slides was remaining. So I thought I should take once more. Now you know that tablet is a unit dosage form meant for oral administration or by different routes. Now tablet, okay, so tablet coating is also there, film coating is there, enteric coating is there, sugar coating is there. Now why one has to do sugar coating, film coating or enteric coating? There is a reason behind that. So tablet coating is done for, what are the reasons? Tablet coating is done for first to mask the taste, to mask the taste. So if drug has a bitter taste, very bitter taste, intense bitter taste, so it is not palatable, it is not okay, convenient for user. So obviously to mask the taste, you are coating the tablet. Again, to mask the taste, odor or color of drug. So if you have black color, so obviously it is not easy, it is not illegal. अगर ब्लैक कलर का कोई टैबलेट है तो अच्छा नहीं लगता आपको लेने के लिए. So obviously to mask the taste of tablet, to mask the odor, to mask the color of tablet coating is done. Coating means what? Coating means there is a application of thin layer, application of thin layer over a tablet, application of thin layer over a tablet, that is a coating. Tablet coating is done to mask the taste, to mask the odor, to mask the color of tablet. Again, to provide a physical and chemical protection, to provide a physical and chemical protection to the tablet from environment. So suppose if you want to prevent the moisture penetration in the tablet, so you have to cover a tablet with a thin film to prevent the physical and chemical protection for the tablet. Okay? To prevent the moisture penetration, to prevent the oxidation of tablet API. So you are covering a tablet with a thin film, that is known as a coating of tablet. Okay. So again, the purpose of coating is nothing but to protect the tablet from gastric environment. Suppose your tablet consists of a drug which is destroyed by GIT or which is destroyed by gastric juice. Suppose your tablet has a enzyme, suppose your tablet has a hormone, suppose your tablet has a some कंटेंट विच इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय एसिड. तो एसिड में डिस्ट्रॉय हो रहा है आपका एपीआई. जैसे आपके इसमें कोई इंसुलिन है, आपके इसमें कोई हार्मोन है, आपके इसमें कोई एंडोजेनस कोई पेप्टाइड है ना, कोई सपोज आपके इसमें एंजाइम है ना. सो ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट, सो यू आर मेकिंग एंट्री कोटिंग. अगेन, to avoid the incompatibilities between the drug. If you are formulating a tablet containing a two drugs, अगर आपके एक ही टैबलेट में दो ड्रग है and both drugs are incompatible to each other, so obviously you have to formulate one drug tablet, you have to coat the tablet with the impermeable thin coating, and then again you can compress that tablet. So bilayer tablet to avoid the incompatibility. To improve the pharmaceutical elegance by use of special color and contrast painting, so tablet will look like a beautiful. So these are the reasons for tablet coating. Tablet must be resistant to the abrasion and chipping for tablet coating process. So basically what are the reasons for tablet coating? आप tablet coating क्यों करते हो, क्या रीजन क्या है? पहले तो है टू मास्क द टेस्ट ऑफ tablet, to mask the odor, to mask the color of tablet or color of drug. So if your drug is bitter, if it is having bitter odor, if it is having nasty odor, so you have to mask that odor. So film coating is mostly recommended. So film, what is main purpose of film coating is nothing but the to mask the taste. तो फिल्म कोटिंग जो करते हैं अपन, a thin film is applied over a tablet to mask the taste. It is a film coating of tablet. So to mask the taste, to mask the odor, to mask the color. So mostly film coating of tablet is done. Film coating is done. There is a application of one thin film over a tablet surface to improve or to provide a physical and chemical protection of drug. Again, same thing is satisfied by film coating. So film coating will also provide physical and chemical protection to the drug. Third, to provide the to protect the product from gastric environment. So enteric coating is done
to satisfy this purpose. So entry coating will entry coating just of entry coating polymer or pH dependent polymers. So they will not release a drug in a acid environment. They will release a drug in a intestine when there is a basic environment. Okay? So first two purpose are fulfilled by your film coating of tablet. Third purpose is fulfilled by entry coating of tablet. Okay? To avoid the incompatibilities of drug, to avoid the incompatibilities between two drugs. Again, compression coating, or again, if there is a thin non-reactive film between two incompatible drugs in the tablet, so that will relieve your problem. Okay? So to avoid the incompatibilities between two drugs, to improve the pharmaceutical elegance by use of special color and contrast painting. Now for a film coating of, for a coating of tablet, and for a coating of tablet, a tablet must be resistant to the abrasion. During कोटिंग किया जाता है कोटिंग पैन में. Okay? तो कोटिंग पैन में कोटिंग किया जाता है टैबलेट का, और वो जो टैबलेट है abrasion के लिए it is exposed to abrasion little bit. So tablet should be resistant to the abrasion for coating purpose, resistant to the chipping also. अगर टैबलेट बहुत ही फ्रेजाइल है, अगर बहुत ही जल्दी ब्रेक हो रहा है, तो कोटिंग कैसे करेंगे? So obviously these are the reasons for tablet coating, and I must say there are 3-4 type of tablet coating. Film coating of tablet is there, sugar coating of tablet is there, and entry coating of tablet is there, right? So coating solution available in the market. This is known as a tablet coating pen. ये coating pen होता है ना? आपको tablet इसमें place करना है, tablet punching होने के बाद में इसमें रखना है, और इसको एक रोटेशन रहता है पर्टिकुलर एज पर द एसओपी, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से, है ना? वहाँ पे रोटेशन फिक्स होता है. वहाँ पे यहाँ से हॉट एयर और ड्राई एयर आता है. यहाँ से स्प्रे सॉल्यूशन आता है, कोटिंग स्प्रे सॉल्यूशन, उसका स्प्रेइंग रेट, ड्राइंग रेट, आरपीएम, ह्यूमिडिटी, वो सब वेरिएबल रहता है, वो सब फिक्स रहता है. So what are the different coating solutions available in the market? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उस टाइम पे बोला होगा आपको. Coating solution product available commercially in market to get less lot to lot color variation. मतलब हर एक 2 बैच में अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो अच्छा नहीं. If two batches of tablet coated by same coating solution, but you are getting a color variation, that means something there is something lacking. So to avoid that lot to lot color variation, so ready-made mixtures, ready-made coating solutions are available. So what are they? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So first is a Opalux. Opalux is a coating solution. Opalux is a coating solution. Is a color concentrate for sugar coating. Opalux is for sugar coating. Okay. Then again another one is there known as Opa spray. Opa spray. Again it is a opaque color concentrate for film coating. So Opalux for sugar coating, Opal spray for film coating. The next one is Opal dry. So it is a film concentrate, complete film coating concentrate. So remember Opalux जो होता है, it is a mixture containing color and plasticizer and all everything. So for the sugar coating of tablet. Then Opal spray is for film coating of tablet. Opal dry is for complete film coating concentrate. Fluid bed process using fluidized bed granulator process may be 3 types depending upon the. So coating can be done by using different steps, different technique. तो coating के लिए आपको coating pan होते हैं, pan coating of tablet. Pan coating एक process होता है, okay? Pan coating is there. Then fluidized bed coating is there. ये FBD is there. Fluidized bed coating. Then compression coating is there. Compression coating is there. There are different coating technique. Pan coating, then fluidized bed coating, and then compression coating. So fluidized bed coating or fluidized bed granulator is used for fluidized bed coating, and this process is of 3 type. ये 3 टाइप का होता है. The process may be of 3 type depending upon the flow of air. तो एयर सप्लाई कहाँ से हो रहा है उसके विषय ऊपर. फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग और फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रैन्युलेटर जो होता है उसमें 3 टाइप होता है. सो फर्स्ट वन इज नोन एज अ टॉप स्प्रे. So here top spray. Second one is the bottom spray. Bottom spray is known as a roster technique. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Bottom spray is known as a roster technique and tangential spray is there known as a glad air technique. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है.
So there are three type of FBD, a fluidized bed granulator coating technique. So depending upon the flow of air, top spray is there, bottom spray is there, and tangential spray is there, right? So these three technique. So you can say over here, you can see over here, these are the technique. So this is known as a top spray technique. This is known as a top spray. This is known as a top spray. You can see over here, coating solution is sprayed from the top. Okay. So here is a, here is a, and that is sprayed from the top. Okay. Then air is blown from the bottom of that. Okay. So top spray. Then bottom spray. You can see from the bottom it is being sprayed. Third one is a tangential spray. So top spray, bottom spray is known as a roster technique, and tangential spray is known as a ग्लैट एयर टेक्निक. तो याद रखना है, इसके ऊपर नाइपर में भी क्वेश्चन होता है. ग्लैट एयर टेक्निक, ग्लैट एयर टेक्निक. So am I audible to you? Now you can see sugar coating of tablet, very important. I already covered this, but again I would like to revise it. Sugar coating of tablet, very important. A lot of times they already ask question on this. Steps of the sugar coating of tablet and purpose extraction. Now in the before 2 decades, there was another technique for sugar coating of tablet. Nowadays it's different. At that time there was no sophisticated instrument, there was no automated machines. Nowadays it is there. So at that time whatever steps they are described, same steps I have listed over here. Nowadays it is a little bit different. Okay. So sugar coating of tablet, why there is a coating of sugar coating क्यों लगता है, and sugar coating is done to mask the taste, taste and odor again. So sugar coating of tablet is mostly done in particular type of formulation. जैसे होता है antacids. Sugar coating of tablet is done mostly with the antacid. Which sugar coating is done mostly with the antacids. Then your vitamin preparations. Antacid like use GLC tablet वगैरह हुआ है. Then vitamin preparation, for example supradine tablet अभी market में आता है supradine. So that is a chocolate coated tablet over here. So and tablet which are meant for the pediatric use. So steps in the sugar coating. पहला है seal coating और sealing. पहला step क्या बोलते हैं अपन, seal coating और sealing. First step is known as seal coating or sealing. And what is the purpose? Okay, in the detail if you want to read you can go and read it in the book. What is important? So seal coating or sealing of tablet. Okay. So in the sugar coating of tablet first step क्या होता है, seal coating or sealing. Now what is the purpose of seal coating? That is to prevent the moisture penetration into the core of tablet. Moisture penetration in the core of tablet. So to prevent the moisture penetration you have to सील दैट टैबलेट. आपका जो भी टैबलेट कोर है, टैबलेट बनाया आपने पंचिंग में, जो कोर टैबलेट है उसको पहले सील करो ना, वाटर इम्पर्मिएबल पॉलीमर से. So that polymer you have to use which is impermeable to the water. So you have to coat that core first time with the shellac. Shellac is a water impermeable है ना, that will prevent the water moisture penetration in the tablet. तो पहले ज़माने क्या होता था, पहले ज़माने में पूरा के पूरा टैबलेट डाल दो एक बार. पहले ज़माने में स्प्रेइंग टेक्निक नहीं था. सो सॉल्यूशन डालो उसमें. सॉल्यूशन क्या होता था, डालने के बाद में कोर ऑफ टैबलेट तक जाता था. एंड इफ एक्वियस और वाटर अगर कोर टैबलेट में गया, that will also cause hydrolysis of your drug. So that's why to prevent that seal coating was used. First step of sugar coating is a seal coating, and for that two type of polymer they are used. Purpose याद रखो, purpose के ऊपर क्वेश्चन आया है GPAT 2020. So what is the purpose of seal coating of tablet in a sugar coating? To prevent the moisture penetration. Okay? Moisture penetration in the core of tablet. यहाँ पे condition हो गया, ये penetration. To prevent the moisture penetration in the tablet core, seal coat is applied. Now sealing is done by using shellac and zain.
ZEI. These are the two polymer which are used for seal coating. First one is the shellac. Now, what is the main disadvantage of shellac? When shellac is used as a sealant in the seal coating of the sugar coating of tablet, so it will increase the disintegration time and dissolution time. But when Zain is used, so it will not increase diso and dt. Okay, so you have to remember. तो पहला स्टेप होता है आपका seal coating और sealing and purpose क्या है उसका to prevent the moisture penetration in the core of tablet. पॉलीमर कौन सा यूज करना है? shellac and Zain. shellac and Zain. shellac जब यूज करेंगे तो उसका disadvantage क्या है? It will increase the diso and dt. When Zain is used, there is no. So first step, पहला स्टेप ये हो गया आपका एक. सेकंड स्टेप होता है शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट में सब कोटिंग. सब कोटिंग मतलब क्या है? सब कोटिंग मींस here, okay, here you have to apply few coat of sugar. You have to apply sugar solution syrup. Okay, so to round the tablet edge. पर्पज क्या है उसका? टू राउंड द टैबलेट एज. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी. पर्पज ऑफ शुगर सब कोटिंग इन द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट टू राउंड द टैबलेट एज. जो टैबलेट का कॉर्नर्स है उसको राउंड करने के लिए. टू इंक्रीज द bulkiness of tablet, to increase the tablet weight. So several coats, several, so you can say 20 to 30 coats of syrup, sugar syrup is applied in a subcoating to round the edges to build up the tablet size, to build up the tablet size. तो इसमें टैबलेट बड़ा हो जाता है. आपका टैबलेट का साइज है छोटा, टैबलेट का वेट है कम, तो इसमें वेट डबल हो जाता है. So increasing the weight by 50 to 100%. 100%. Remember, doubling of weight can be possible in the subcoating or sugar coating of tablet. So in the subcoating, several coat of syrup is applied to a tablet to build up the tablet size to round the tablet edges and increasing the weight may be up to 50 to 100%. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Nowadays, sophisticated tablet coating machines are there. So there is a little bit increase in the tablet weight. आजकल इतना नहीं होता, लेकिन there is increase in the weight. Control of drying rate is very important while applying the subcoat. Now third step होता है syrup coating or also known as a smoothing or also known as a coloring. ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. सब कोटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Now what is the purpose of syrup coating? To fill up the imperfections in the tablet caused by subcoating. जो above step है उसमें जो imperfections बचा था वो आप फिलअप करना है. इसका काम है सिरप कोटिंग और स्मूथिंग और कलरिंग. नाउ स्मूथिंग और कलरिंग, एज द नेम इंडिकेट कलरिंग. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टेप? टू इंपार्ट अ डिजायर्ड कलर टू ए टैबलेट. ओके, सो इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है. कलर इज एडेड इन द फॉलोइंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट. दो बार क्वेश्चन आ चुका है. दैट इज अ सिरप कोटिंग और स्मूथिंग और कलरिंग. नाउ टैबलेट इज स्मूथ व्हेन कलर इज अप्लाइड. कलर इज अप्लाइड व्हेन टैबलेट इज स्मूथ टू अवॉइड द मॉडलिंग अपीयरेंस. जब टैबलेट स्मूथ होगा तब कलर अप्लाई करना है. नाउ रिक्वायर्स हाई स्किल. ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द शुगर कोटिंग विल रिक्वायर हाई स्किल? सो सिरप कोटिंग और स्मूथिंग और कलरिंग. बाद में होता है फिनिशिंग. देन अगेन यू हैव टू फ्यू क्लियर कोट्स ऑफ सिरप हैज टू बी अप्लाइड. दिस स्टेप इज आल्सो नोन एज अ फाइनल सिरपिंग. इसको फाइनल सिरपिंग बोलते हैं. लास्ट स्टेप होता है पॉलिशिंग, है ना, to get a desired luster to a tablet, to get a desired appearance. Polishing is done by using beeswax or carnauba wax, or the solution of these wax are made in a stable volatile solvent. So this is known as a sugar coating of tablet. तो इतना important है sugar coating of tablet में, है ना. sugar coating of tablet में क्या होता है कि dissolution disintegration time बढ़ जाता है. What is the dissolution? What is the dissolution disintegration time for sugar coated tablet? अगर मालूम नहीं तो आप लिख लो 60 मिनट. 60 मिनट. ओके, शुगर कोटेड टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम वी ऑलरेडी सीन फॉर ऑल टैबलेट्स. नाउ नेक्स्ट होता है फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट. सो कोटिंग तो इसी में करना है, कोटिंग पैन में करना है. फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, मेन पर्पस ऑफ फिल्म. ओके, फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स यूज्ड इन द टैबलेट कोटिंग, राइट. सो फॉर द फिल्म कोटिंग पर्पस क्या है? टू मास्क द टेस्ट, टू मास्क द odor, टू मास्क द कलर ऑफ your API. So first, non-enteric coating polymer used in the film coating. You can say these are the film coating polymers. Film coating polymers which are not enteric coating. They are only for film coating, not enteric coating. So इसमें polymer कौन से? मिथाइल सेलुलोज. All these are the cellulose derivative. ये सब क्या है?
cellulose derivative. All these are the cellulose derivative. So first one is methyl cellulose, non-enteric coating, useful polymer for aqueous film, low viscosity grade is the best. In case of methyl cellulose, it is useful for aqueous film formation. So it is a useful polymer for aqueous film, low viscosity grade methyl cellulose. Low viscosity grade methyl cellulose means low molecular weight methyl cellulose that is used for the best result. सेकंड होता है इथाइल सेलुलोज. रिमेंबर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. इट इज इनसोल्युबल इन द वाटर. सो इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन है. व्हिच सेलुलोज डेरिवेटिव इज इनसोल्युबल इन द वाटर एंड जीआईटी फ्लूइड. सो इथाइल सेलुलोज इज इनसोल्युबल इन जीआईटी फ्लूइड एंड वाटर. इट इज नॉट यूज्ड अलोन. ये अकेला नहीं यूज करते, इसके साथ में दूसरा यूज करते हैं. थर्ड वन इज एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था द मोस्ट कॉमन फिल्म फॉर्मर इन द फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट, that is a hydroxypropyl methyl HMC. So it is an excellent film former, soluble in the cold water, GID fluid, polar solvents and lower alcohol. So इसके ऊपर क्वेश्चन है most common, it is a most common film former in the film coating of tablet. Most common film former in the film coating. ठीक है. नेक्स्ट होता है सोडियम कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC. So if presence of moisture is not a problem, presence of moisture in the solvent is not a problem, then it is used. This होता है povidone, polyvinyl pyrrolidone. It is okay. It is the tablet coated with the povidone will become hygroscopic if it is used alone. Thickened during drying, soluble in water and GIT fluid, alcohol IPA. IPA मतलब isopropyl. पॉलीथिलीन ग्लाइकोल. नेक्स्ट होता है पॉलीथिलीन, मेनली यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन द फिल्म कोटिंग ऑफ टॉयलेट, दैट इज अ पॉलीथिलीन ग्लाइकोल एंड इट इज आल्सो फिल्म फॉर्मर, सोल्यूबल इन द जीआईटी फ्लूइड, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया फिल्म कोटिंग पॉलीमर. इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिटेल प्रोसेस आपको पढ़ना है तो बुक में से पढ़ो. नाउ एंट्री कोटिंग ऑफ टैबलेट, एंट्री कोटिंग ऑफ टैबलेट है ना. डिटेल में क्या पढ़ना है, बाद में से कोई पैरामीटर्स, आरपीएम कितना रखना है, क्या रखना है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वही नॉट इम्पोर्टेंट. एंट्री कोटिंग मीन्स व्हाट. सो एंट्री कोटिंग पॉलीमर और टैबलेट coated with एंट्री कोटिंग पॉलीमर or pH dependent polymer, they will release a tablet in the intestine, not in the stomach. So first one is shellac. So shellac is an entry coating polymer, pH dependent polymer. It will release tablet in the intestine. It may delay the release too long. And again, high batch to batch variability is there, soluble in a water at a pH 7. मतलब ये एसिडिक pH में ड्रग रिलीज नहीं करेगा. ये कब रिलीज करेगा, जब pH 7 आएगा तब. So in the intestine, that's why it is a enteric coating polymer. Enteric coating. Second होता है cellulose acetate phthalate. उसको बोलते हैं अपन कैप. सेलुलोज एसिटेट थैलेट, CAP. जितने भी सेलुलोज डेरिवेटिव है उसके आगे थैलेट लगा दो, वो बन जाएगा एंट्रिक कोटिंग. सो ऑल सेलुलोज डेरिवेटिव जस्ट अटैच टू थैलेट. सो सेलुलोज एसिटेट थैलेट, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज थैलेट और HPMCP, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट. थैलेट हटा दिया, दैट विल बिकम फिल्म कोटिंग पॉलीमर. थैलेट लगा दिया, दैट विल बिकम एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर. इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल टू यू? So cellulose acetate phthalate dissolves in the distal duodenum. It will get dissolved in the distal duodenum and requires the presence of plasticizer such as a triacetine or castor oil. Plasticizer भी important है. It is somewhat hygroscopic, dissolved in the acetone ethyl alcohol if pH is 6. So obviously ये कब dissolve होगा, pH 6 में. So it is dissolved. So it will release a drug in a duodenum, not in the stomach. So that's why entry coating. So when pH is 6, it will dissolve. That's why they are also known as a pH dependent polymer. Entry coating polymers, they are known as a pH dependent polymer. Polyvinyl acetate phthalate. Polyvinyl acetate phthalate dissolve in the whole length of duodenum when pH is more than 5. pH अगर 5 से ज़्यादा है तो ये polyvinyl acetate phthalate dissolve हो जाएगा. नेक्स्ट होता है हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, HPMCP.
dissolves in the proximal end of duodenum. एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर में शेलेक है ना, थैलेट है, देन पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स। पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स में उनको बोलते हैं यूट्रेजिट। देयर आर 6-7 वैरायटीज ऑफ यूट्रेजिट, वो लैकमन में दिया है, मैं लेने वाला था। अभी जो थर्ड पार्ट आएगा आपका टैबलेट टैबलेट नहीं, एक्सपेंट का थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें और रहेगा पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स, तो उसको बोलते हैं यूट्रेजिट। देयर आर 5-6 varieties, but here only two I have discussed. So Utrecht L is there and Utrecht S is there. So Utrecht L will release the drug when pH is 6, more than 6. जब pH 6 से ज़्यादा होगा तो Utrecht L क्या करेगा, ड्रग रिलीज करेगा, मतलब इंटेस्टाइन में, and pH is more than 7, Utrecht S will release the drug. Mixture of both can provide entry coating as well as sustained release. Some commonly used film plasticizer, plasticizer कौन से थे, phthalate esters, citrate esters, triacetine, propylene glycol, polyethylene glycol and glycerin. So they are used as a film former in the, so they are used as a plasticizer in the film. Now evaluation of tablet coating, ये बाकी था अपना, evaluation of coated tablet, जो coating हो चुका है properly हुआ है नहीं हुआ है, उसके evaluation के लिए क्या क्या टेस्ट है. So first is a adhesion test. Adhesion test. Adhesion test is done by टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर, है ना, नाइपर में आ चुका है ये. adhesion test in the coated tablet is done in a tensile strength tester. Then diametral crushing strength, diametral crushing strength, it is done by using tablet hardness tester. Stability studies, measurement of weight gain, मतलब है ना, short term stability, long term कितना weight gain होता है, provides the information on the protection provided by the pill. तो है ना, विजुअली इंस्पेक्शन करना है आपको फॉर द क्वालिटी ऑफ कोटिंग, रेट ऑफ डेसिडिएशन डिसोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल लिस्ट टैबलेट. इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर फिल्म कोटिंग टैबलेट, तो इसमें वाटर वेपर परमेबिलिटी, है ना, कितना वाटर वेपर परमेबल करता है, कितना रेजिस्ट करता है. ओके, सो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं तो आप. देन फिल्म टेंसाइल स्ट्रेंथ. Now it is evaluated by applying a known force at a constant rate. So these are the evaluation parameter for coated tablet. कि उसका adhesion test है वो है using tensile strength tester, diametral crushing strength by using hardness tester, stability है to okay, to notice a weight gain which will provide you idea about the protection provided by the pill. Then visual inspection चेक करना है, रेट ऑफ डिसिपेशन एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल रिलीज. देन वाटर वेपर परमेबिलिटी एंड फिल्म टेंसाइल स्ट्रेंथ. नाउ फिल्म डिफेक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. फिल्म डिफेक्ट, जो कोटिंग किया है उसमें क्या क्या डिफेक्ट आता है. फिल्म कोटिंग डिफेक्ट, फर्स्ट इज नथिंग बट द स्टिकिंग एंड पिक. अपने टैबलेट डिफेक्ट देखे, टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट नहीं देखे, स्टिकिंग एंड पिकिंग. सो it is because of the overweighting and excessive film thickness. ओवरवेटिंग, ज़्यादा अगर है ना गीला हो गया, ज़्यादा गीला हो गया, ओवरवेटिंग और एक्सेसिव फिल्म थिकनेस, एक्सेसिव फिल्म थिकनेस, ओवरवेटिंग और एक्सेसिव फिल्म थिकनेस will cause sticking and picking, right? Then overweighting or excessive thickness of tablet will cause to stick to each other in a coating pan. दो टैबलेट है, ज़्यादा वेटिंग हो गया तो दो टैबलेट एक में को चिपक जाएंगे, ज़्यादा उसमें फिल्म का थिकनेस है तो एक में के ऊपर चिपक जाएंगे. ऑन अ ड्राइंग ओके, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्राइंग के वक्त जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ओके, ऑन अ ड्राइंग एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, piece of film may remain adhere, piece of film may remain adhere to the pan or to the another tablet, giving picked appearance, giving picked appearance. तो इसका रेमेडी होता है रिडक्शन इन द लिक्विड एप्लीकेशन रेट, जो स्ट्रेइंग रेट होता है उसमें कम करना है, और इंक्रीजिंग द ड्राइंग रेट, और ड्राइंग रेट बना सकते हो एयर टेम्परेचर एंड ओके, एंड देयर वॉल्यूम विल, okay, their volume, that will solve the problem.
अगर स्टिकिंग एंड पिकिंग कोटेड टैबलेट में आ रहा है तो क्या करना है, एप्लीकेशन जो है स्प्रे रेट आपको डिक्रीज करना है, ड्राइंग रेट है ना इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है ना, वॉल्यूम एप्लीकेशन का कम करना है, विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट होता है रफनेस ऑन द फिल्म। जो फिल्म कोटेड टैबलेट है उसके ऊपर रफनेस होता है, रफ फिल्म, रफ और बेटी सरफेस। सम टैबलेट में ड्राई टू रैपिडली, कुछ टैबलेट जो ना जो ड्राई होते जल्दी ड्राई होते। हेलो हेलो, हाँ हाँ, किती वाजता ना तुम्ही? ठीक है, सो a rough or gritty surface, some tablet may dry too rapidly before reaching to a tablet bed, result into deposit on the surface of tablet, that is known as a roughness of tablet। तो रफ और ग्रिटी सरफेस होता है कोटेड टैबलेट में, क्यों? सम टैबलेट में ड्राई टू रैपिडली, जल्दी ड्राई होते हैं बिफोर रीचिंग टू ए टैबलेट बेड, क्योंकि ऊपर से गर्म हवा आ रहा है, blowing up hot air is there, that result in the deposit on the surface of tablet। so उसके लिए रेमेडी क्या है? reduce the speed of atomization and keep nozzle closer to the tablet bed। नजल जो है स्प्रेइंग का टेबलेट बेड में क्लोजर होना चाहिए। ऑरेंज पिलीपिक, नेक्स्ट होता है ऑरेंज पिलीपिक, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हाट इज ऑरेंज पिलीपिक? inadequate spreading of coating solution, inadequate spraying of or spreading of coating solution before drying, inadequate spreading or spraying of coating solution, inadequate spreading of coating solution before drying will cause bumpy or orange peel effect on coating। ऑरेंज पिल इफेक्ट क्या है? ऑरेंज पिल का इफेक्ट क्या होता है? inadequate spreading of coating solution before drying will cause bumpy or orange peel effect on a coating। रेमेडी क्या है? You have to decrease the thickness of your coating solution, thinning of solution with additional solvent। नेक्स्ट होता है ब्रिजिंग एंड फिलिंग, ब्रिजिंग एंड फिलिंग। सो ड्यूरिंग द ड्राइंग फिल्म में सिंक, जब ड्राई होता है तो फिल्म क्या होगा? जो कोटिंग फिल्म है, टैबलेट नहीं, कोटिंग फिल्म may shrink and pull away from the sharp corner as an entangulation or bisect, resulting into bridging surface depression। ड्राइंग के टाइम पे क्या होता है? जो फिल्म है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो पुल अवे हो जाता है फ्रॉम द शार्प कॉर्नर, जैसे मोनोग्राम हो गया हुआ, एंड entangulation or bisect resulting into bridging of a surface depression। रेमेडी क्या है इसके लिए? चेंज और इंक्रीज द प्लास्टिसाइजर कंटेंट, प्लास्टिसाइजर कंटेंट बढ़ाना है ना। फिलिंग क्या होता है? फिलिंग इज कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ टू मच सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन अ थिक फिल्म दैट फिल्स नैरो मोनोग्राम और बाइसेक्ट। जो मोनोग्राम होता है वहां पे भी ज्यादा थिक सॉल्यूशन है आपका कोटिंग सॉल्यूशन, तो वो मोनोग्राम जहाँ पे डिप्रेशन है वो फिल कर देगा, दैट इज नॉट फिलिंग। देन नेक्स्ट होता है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग मतलब too rapid evaporation of solvent, TWO, too rapid evaporation of solvent from the core and effect of temperature on the strain elasticity adhesion film may result in the blistering during the further drying of a tablet in oven। तो rapid evaporation of solvent from the core of tablet, also because of the temperature, strength, elasticity adhesion of the film। So, too rapid evaporation of solvent from the core of tablet may affect the temperature, strength, elasticity and adhesion of the film। So, film में उसका temperature, strength, elasticity है ना, that may result in the blistering during the drying of tablet in the oven। और रेमेडी क्या है? Decrease the drying rate। यहाँ पे रेमेडी क्या है? Decrease the drying rate on the blistering। Now, hazing of film or dull film, this sometimes is known as a bloom, haze film or dull film, sometimes known as a bloom। It may because of the too high temperature during the processing। It is particularly seen when polymer is a cellulose in aqueous medium। Color variation जो होता है, color variation क्यों? Because of the improper mixing, uneven spray और insufficient coating result in the color variation। रेमेडी क्या है इसके लिए? Addition of different plasticizer। लास्ट में होता है क्रैकिंग।
Cracking occurs if internal stress in the film exceeds the tensile strength of the film. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका उससे ज़्यादा अगर इंटरनल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वो फिल्म ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है. तो रेमेडी क्या है इसके लिए? इंक्रीजिंग द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, यूज हायर मोलिकुलर वेट पॉलीमर और कोटिंग ब्लेंड. These are the different कोटिंग डिफेक्ट, है ना. कोटिंग डिफेक्ट, टैबलेट डिफेक्ट तो एक है, कोटिंग डिफेक्ट नहीं देखा था इसलिए. सो ब्रिजिंग एंड फिलिंग, ब्लिस्टरिंग, हेज फिल्म और डल फिल्म कलर वेरिएशन, क्रैकिंग पहले भी देखा है आपने, ऑरेंज फिल्म इफेक्ट वगैरह. नेक्स्ट इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कोटिंग. स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कोटिंग, तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कोटिंग, कोटिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं. जैसे पैन कोटिंग होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग, ये बड़ी पैन कोटिंग, जैसे मैंने पैन कोटिंग, पैन कोटिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर टेबलेट कोटिंग. देन एफबीडी फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग, एफबीडी एफबीडी भी होता है, एफबीडी फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग. बट अदर कोटिंग आर आल्सो देयर. सो compression कोटिंग, compression कोटिंग, स्पेशलाइज्ड कोटिंग में टैबलेट विद इन अ टैबलेट. मतलब क्या करना है यहाँ पे, एक पंचिंग करना है. टेक अ ग्राइंड ऑफ, जैसे मान लीजिए if three drugs are there and three drugs if they are incompatible, so first compress paracetamol, okay, then on this tablet only compress another drug known as a aspirin, on this only compress another drug known as a phenylbutazone. So this is known as a compression coating. Efficient, very efficient for, okay, compression coating. Now next is electrostatic coating. Electrostatic coating किसमें efficient for conductive drug conductive, complete and efficient uniform coating of corners and entangulation is possible in this. तो होता है deep coating, dipping of tablet into a coating solution, then weight of tablet is dried using conventional plan. तो इसमें कोटिंग सॉल्यूशन में डीप करना है टैबलेट, बाद में उसको ड्राई करना है. डीप कोटिंग, वैक्यूम कोटिंग और वैक्यूम कोटिंग फिल्म, वैक्यूम फिल्म कोटिंग. कोटिंग सॉल्यूशन जो है is applied with the airless hydraulic spray on the tablet which is placed in a specially designed baffled pan. Now new method for coating is a new method for compression coating, electrostatic coating, deep coating and vacuum film coating. These are the new methods for